इन क्वेश्चन को स्टडी कराएंगे। आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये पार्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने से पहले हमें उसके मोलिकुलर फॉर्मूले को हार्डली लर्न होने चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला है CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर फॉर्मूला है CaCO3। वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है H2O। स्टूडेंट्स, कैल्शियम इधर 1 एटम है, राइट साइड में भी 1 एटम है। एरो से पहले कैल्शियम के 1 एटम है, आफ्टर एरो कैल्शियम का 1 एटम है। कैल्शियम बैलेंस है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम है, बट 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 हो गया। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 हुए। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम और 1 4, तो ऑक्सीजन भी बोथ साइड बैलेंस है। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है और इधर भी 2 एटम है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब लास्ट हमारे पास कार्बन का है, कार्बन का इधर 1 एटम है और इधर भी कार्बन 1 एटम है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में ईच एटम की नंबर बोथ साइड सेम है, so this is the balanced equation. Next equation is जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्रोड्यूस करता है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का जो सिंबल है हमारे पास Zn है, प्लस सिल्वर का जो सिंबल है AgNO3 है। हमारे पास जिंक नाइट्रेट का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस सिल्वर का जो सिंबल है Ag। स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं ZnNO3 होल ट्वाइस रखा हुआ है, क्यों है? Zn की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है 2 प्लस होती है, NO3 की जो कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर होती है 1 होती है। ये ऑक्सीडेशन नंबर इधर और ये ऑक्सीडेशन नंबर इधर, ये हुआ हमारे पास ZnNO3 होल ट्वाइस। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ जिंक नाइट्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड हमारे पास जिंक का 1 एटम है, राइट साइड जिंक का 1 एटम है। जिंक इज बैलेंस। नाउ NO3 के इधर हमारे पास 2 रेडिकल्स है, इधर 1 रेडिकल है, तो हम क्या करेंगे? AgNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। AgNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या देखते हैं कि हमारे पास Ag भी इधर 2 हुआ, बट इधर 1 है, तो हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास अब बैलेंस इक्वेशन हुई। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट पे हमारे पास है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड
एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एरो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम का जो सिंबल है हमारे पास Al, कॉपर क्लोराइड का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कॉपर क्लोराइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CuCl2। एरो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए AlCl3। एल्यूमिनियम की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होती है 3+ और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है 1-। इसकी ऑक्सीडेशन इधर, इसकी ऑक्सीडेशन इधर, AlCl3 प्लस कॉपर का जो सिंबल है Cu। स्टूडेंट्स, इधर एल्यूमिनियम का 1 एटम है, इधर भी एल्यूमिनियम का 1 एटम है। एल्यूमिनियम बैलेंस है। कॉपर का इधर 1 एटम है, कॉपर के इधर भी 1 एटम है, कॉपर भी बैलेंस है। क्लोरीन के इधर 2 एटम है और इधर क्लोरीन के 3 एटम है। क्लोरीन हमारे पास डिसबैलेंस है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो हमको क्या करना होगा, क्लोरीन को 6 बनाना होगा। तो क्लोरीन को 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, CuCl2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास एल्यूमिनियम के इधर 2 एटम होंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर कॉपर के 3 एटम होंगे तो हमें यहाँ कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है BaCl2 होता है। पोटेशियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है K2SO4 और हमारे पास बेरियम सल्फेट के लिए BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड के लिए KCl। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास पोटेशियम के इधर 2 एटम है, इधर 1 एटम है, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्लोरीन के इधर 2 एटम्स हो गए, इधर क्लोरीन पहले से 2 एटम। SO4 का हमारे पास इधर 1 रेडिकल है, उधर हमारे पास 1 रेडिकल है। SO4 बोथ साइड हमारे पास 1 रेडिकल है। SO4 बैलेंस है। बेरियम का इधर 1 एटम है और इधर भी 1 एटम है, बेरियम भी बैलेंस है। नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. Potassium bromide plus barium iodide arrow barium bromide plus potassium iodide. Potassium bromide plus barium iodide arrow potassium iodide plus barium bromide. Part potassium bromide aqueous solution plus barium iodide aqueous solution arrow potassium iodide aqueous solution plus barium bromide solid. Students, पोटेशियम ब्रोमाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KBr। पोटेशियम की जो
ऑक्सीडेशन नंबर होती है 1 होती है और ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है 1 होती है और इसकी नंबर इसके पास, इसकी नंबर इसके पास, ये हुआ हमारे पास KBr। नाउ KBr प्लस BaI2, बैरियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2 प्लस होता है, आयोडाइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 माइनस होता है। इसकी नंबर इधर, इसकी नंबर इधर, तो BaI2। पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस, ये इक्वश है, ये भी एक्वश है और ये भी एक्वश है। बैरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये सॉलिड। नाउ स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। हमारे पास इधर ब्रोमाइड का 1 एटम है, इधर ब्रोमाइड के 2 एटम है, इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इधर आयोडाइड का 2 एटम है, इधर आयोडाइड का 1 एटम है, इससे भी ये मालूम होता है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। नाउ इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमारे पास आयोडाइड के 2 एटम है, तो हमने पोटेशियम आयोडाइड के 2 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास ब्रोमाइड के इधर 2 एटम है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास बैरियम का 1 एटम, इधर भी बैरियम का 1 एटम, ईच एटम्स इक्वल है बोथ ईच साइड। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में ईच एटम की जो नंबर है ईच साइड बैलेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, सी हमारे पास जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस में। जिंक कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ZnCO3। जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CO2। जिंक इधर 1 एटम है, इधर भी जिंक का 1 एटम है, बैलेंस है। कार्बन का इधर 1 एटम है, कार्बन इधर 1 एटम है, कार्बनिक बैलेंस है। तो ऑक्सीजन के इधर 3 एटम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 और 1 3 हो गई, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हमें इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। इक्वेशन में हमारे पास 1 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल में। दिस मीन्स यहाँ पर ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। This is the decomposition reaction when one molecule is split up into 2 or more simpler molecule is called decomposition reaction. This is decomposition reaction. Now students, अब हमारे पास next part है C part. C part में हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है। प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी हमारे पास गैस मिला। हाइड्रोजन का जो हमारे पास सिंबल होता है H होता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए H2 का यूज होता है। क्लोरीन का जो सिंबल होता है Cl होता है और क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब हमारे पास इधर 2 एटम्स हाइड्रोजन के, इधर 2 एटम्स क्लोरीन के, यहाँ पे हमारे पास 1 एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन के। सो दिस इज नॉट बैलेंस इक्वेशन। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी हैव टू मल्टीप्लाई it 2 in HCl. Now we are multiplying by
2 in HCl. So now this is the balance equation. Here students, अब हमने इसको बैलेंस तो कर दिया है, अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। दिस इक्वेशन से हमें मालूम होता है कि टू मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ओनली सिंगल मॉलिक्यूल दे रहे हैं। व्हेन टू और more molecule combine each other to form only a single compound, this is called a combination reaction. This is a combination reaction. This is a combination reaction. Now students, D part, magnesium सॉलिड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का हमारे पास सिंबल है Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला है HCl, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ। मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है MgCl2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2, ये हमारे पास एक्वस मिलेगा और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि सबसे पहले ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। हमारे पास मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, मैग्नीशियम मेटल से हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिला। हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम ईच साइड बैलेंस है, बट क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस नहीं है। नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन और वी हैव टू मल्टीप्लाई HCl by 2। अब हम HCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। HCl को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम की नंबर्स बोथ साइड सेम हो जाती है। नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि Mg मैग्नीशियम HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को HCl से डिस्प्लेस करता है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 क्वेश्चन। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन endothermic reaction exothermic reaction are those reaction in which heat is evolved. Those reaction in which heat is evolved are called exothermic reactions. Those reactions in which heat or energy, heat oblique energy evolved। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, सच एज कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं प्लस हीट मिलती है। दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
मीथेन गैस जब एयर में बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस करती हैं। Endothermic reaction are those reaction in which heat is absorbed. Heat absorb हो रही है। Such as example is calcium carbonate solid को जैसे ही हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। This is the example of endothermic reaction. Students, rice, food, fruits, ये सब इन सब में कंटेन स्टार्च, इन सब में स्टार्च होता है। अब स्टार्च ऑन डाइजेशन स्टार्च डिकम्पोज ग्लूकोज, स्टार्च ग्लूकोज में डिकम्पोज होता है। एंटर इन आवर बॉडी ड्यू टू एयर, ग्लूकोज decompose into carbon dioxide, water and liberate energy. Which help us to do work. So respiration is an exothermic reaction. Now students, question number 11 is, why are decomposition reaction called opposite of combination reaction? Write equation for these reaction. Decomposition reaction, in decomposition reaction a compound split splits up into two or more simpler substances, simpler compounds. As far as कैल्शियम कार्बोनेट जैसे हीट किया जाता है
ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन in a combination reaction when two or more compounds react each other to form a single compound is called combination reaction. When two or more compounds react each other when two or more compounds react to form a single compound is called combination reaction. H2 plus auto arrow H2O. This is the combination reaction. Balancing 2. When two or more compounds react to form a single compound is called combination reaction. Decomposition reaction में a single compound is split up into two or more, but in a combination reaction में two or more compounds react each other to form a single compound. So decomposition reaction is opposite of combination reaction, or this is the example of those reactions. These are the examples of those reactions. Now students, question number 12. Write equation each for decomposition where energy is supplied in form of heat, light or electricity. Decomposition reaction. First, thermal decomposition. In a thermal decomposition, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है को हीट करें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन a compound is split up by the heat is called thermal decomposition reaction. Photoelectric decomposition reaction. In a photoelectric decomposition, silver chloride decompose due to the sunlight in silver and chlorine. Is called photoelectric decomposition. Next, electric decomposition.
when a compound is split up by the electricity. वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएंगे. दिस इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write for these reactions. Displacement reaction. Double displacement reaction. Displacement reaction are those reactions in which a more reactive element displaces less reactive element. More reactive element displace less reactive elements from its solution. Example is zinc react sulfuric acid H2SO4, arrow ZnSO4 plus H2 hydrogen gas. This is the displacement reaction. Double displacement reaction when two compounds react each other and though they interchanging their anions. Silver nitrate solution react with sodium chloride, then then they interchange their anions. This is called double displacement reaction. It's called double displacement reaction. Question number 14. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal. Write down the reaction involved. In refining of silver, सिल्वर की रिफाइनिंग में कॉपर इज यूज्ड. कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करता है और सिल्वर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, प्लस कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन. नाउ हियर NO3
2 रेडिकल्स है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2Ag, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट copper displace silver. This is displacement reaction. Next question is question number 15. Question number 15 is, what do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. Precipitation. When two solutions react each other or they produce a solid substances, they produce a solid. That solid substance is called precipitate. Here, sodium chloride react with silver nitrate and produce silver chloride as a solid and silver nitrate as a liquid, aqueous. When sodium chloride react with silver nitrate solution, it produce silver chloride and sodium nitrate. Here, silver chloride is solid, so it is precipitate. White PPT. When two solutions react each other to form a solid substance, that solid substance is called precipitate, or this reaction is called precipitation. When two solutions react each other to produce a solid, that solid substance that solid compound is precipitate, and the reaction is called precipitation. Next question is 16. Question number 16. Oxidation. Gain of oxygen is called oxidation. Mg plus O2 arrow to MgO. Here Mg magnesium gain oxygen produce magnesium oxide. So मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन होता है. दिस इज ऑक्सीडेशन. When magnesium gain oxygen to produce magnesium oxide, it is called oxidation. Next, carbon gain oxidation to produce carbon dioxide. This is the oxidation reaction. Now, reduction.
loss of oxygen is called reduction. Loss of oxygen is called reduction. ZnO plus C arrow Zn plus CO. The next equation is barium sulfate react with carbon, it produce barium sulfide plus carbon monoxide. Here barium sulfate loss carbon oxygen. So this is the reduction. Question number 17. A shiny brown colored element on heating in air becomes black in color. Name the X element and black colored compound. Shiny brown color element is copper. When copper is heated in air, it produces copper oxide. This is the balance equation. Name the X element, copper. Name the X element is copper. And black colored compound formed, copper oxide. Copper oxide. The next question is question number 18. Why do we apply paint on iron articles? Students, you know all metals eaten up gradually by the air, moisture and a chemical such as acid. Iron is painted to protect the rust. आयरन को रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट किया जाता है. बिकॉज eaten up gradually by air, moisture chemical acid such as acid. All metals eaten up gradually by the air, moisture, chemicals such as acids. They lose their brightness.
equation is iron plus oxygen plus moisture के X मॉलिक्यूल Fe2O3 into XH2O. Fe2O3 ये होगा 2O3, 3O2 और ये हो गया 4. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रस्टिंग. ब्राउन कलर लेयर is covered iron surface which is called rust. Now students, अब आपको लास्ट के 2 क्वेश्चंस को स्वयं करना होगा. यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. यदि स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपका और हमारा कम्युनिकेशन अच्छी प्रकार चलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.